प्यारे पेंशनर, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। यहाँ पे एआईबीएफ की तरफ से जो हाल ही में क्वाइट इम्पोर्टेंट अपडेट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 लाख बैंक रिटायरीज के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट उन्होंने सर्कुलर रिलीज करा है, वी कैन शेयर दैट एग्जैक्टली। उसमें काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं, उनको ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्विक मैनर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द एग्जैक्ट सर्कुलर, काफ़ी लेंथी सर्कुलर है। आई विल ट्राई टू रैप इट अप इन 6 मिनट्स। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से जो 9th ऑफ मेमोरेंडम ऑन पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स फॉर सबमिशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 5 लाख बैंक पेंशनर्स बाय ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन। तो ये है इसका सर्कुलर। इसमें आप प्रियम्बल में तो आप लोगों को सभी को पता है, यहाँ पे जो हमारी पेंशन अपडेशन है वो फर्स्ट जनवरी 1986 से पेंशन लागू हुई है रेट्रोस्पेक्टिवली। और ये सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर मैयर है। व्हाट इज द अपडेशन ऑफ पेंशन, ये आप सभी को यहाँ पे दोस्तों पता ही है। इन द केस ऑफ फेमस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, Constitution bench of 5 judges of Honorable Supreme Court laid down the important and basic principle that pension is not a bounty but hard-earned right of pensioners secured during service period and enforceable under law. So the Honorable Court has upheld in the above case that while revising salaries and allowances of existing employees, basic pension of existing pensioners should be revised and pensioners cannot be allowed to be discriminated based on their date of retirement, creating class within the class in similarly placed group through administration measures is violative to principle of equality granted in Constitution of India। तो ये यहाँ पे लिखा गया है that next is no updation exercise has been carried out in banking sector in last 28 years में कोई भी अपडेशन की जो अवधि है वो कोई भी करी गई नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट उन्होंने डिस्क्राइब करा है। बेसिक पेंशन एट टॉप इन 2023 सब स्टाफ में कितनी है, 14,072। और जो फिफ्थ में है, जो हमारे रिटायर हुए हैं अराउंड 1990, उनकी बेसिक पेंशन दोस्तों 755 रुपीज़ है। जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं 13,370 रुपीज़ का। ऐसी जो क्लरिकल्स की जो बेसिक पेंशन है उसका इन्होंने डिफरेंस बताया 22,543। ऐसी स्केल 1 का, तो ये यहाँ पे जो गैप है वो मैक्सिमम 61,000 के अराउंड जाता है स्केल 7 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो फ्रॉम द अबव टेबल it can be seen that sub staff retired in 1990 get basic pension of only rupees 755, while sub staff retiring in 2023 get basic pension of 14,072. So it is a huge difference of 13,317. So in other words, newly retired sub staff gets 1663% more basic pension compared to one who retired 23 years back. So this is the position for all categories of staff as shown in above table. So those retired in earlier settlement are suffering severely in absence of updation, which can be clearly understood from the above data. उसके बाद जो नेक्स्ट है आरबीआई फार्मूला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय लेटर डेटेड नंबर 5th March 2019 has approved updation of pension for RBI pensioners, giving 10% increase after merger of DNS relief at 4440 index. In banking industry, pension scheme was introduced on the model of RBI pension scheme. RBI is a regulator of banking industry. In view of this and logically in all fairness, pension updation in bank should be done as per RBI formula, and DR merger should be 6352 indexes as per 11th base settlement covering pensioners up to 10th settlement. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस लेड ऑन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर updation. Pension scheme in banking industry was introduced as social welfare measure to retirees on the lines of Government of India pension scheme to make bank retirees free from worries of want so that they can lead respectable and peaceful life in last leg of the life.
So adequate provisions were made in pension regulations to define benefits available with statutory granted from the state for timely payment. Further, the Constitutional Bench of Supreme Court, while delivering judgment on 17th of December 1982 in the matter of arbitration, laid down certain basic and fundamental principles like violation of fundamental right as enshrined in Article 14 of the Constitution by creating class within class by denying benefits of liberal pension to early pensioners. तो ये उन्होंने बोला. And 17th December is celebrated as Pension Day every year. So it is our humble request to honorable members of Parliament to support and request the government to ensure that principle laid down in this historical judgment should be taken into consideration besides financial aspects of the exercise. उसके बाद जो पॉइंट उठाया है दैट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ बैंक. तो ये आपको पता ही है, पीएसपी कंटिन्यू टू पोस्ट इम्प्रूव एग्रीगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स of rupees 1,37,000 crore, 1,58,000 crore and 1,55,000 crore. और जो लास्ट में अभी 1920 में 1,74,000 crore के ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो पीएसपी हैज आल्सो नाउ टर्न टू नेट प्रॉफिट 31,820 crores in the last ended March 21. So the performance can be rated spectacular considering contraction in GDP by minus 7.3% due to COVID-19 pandemic. And it is a very positive sign to see the ability of PSB to further increase lending is evident through capital to risk weighted जो कि 14.04 है as on March 31st 2021 against regulatory requirement of 10.87. So NPS भी यहाँ पे काफ़ी decline हो रहे हैं. So it is also worth noting that all PASBs are now out of PCRs, removing all restrictions placed on them and are now functioning under normal rules. So these improvements in performance of banks could become possible due to valuable and dedicated contribution made by a team of present and past employees during challenging times. So we are sure that these facts will get due recognition while carrying out and finalizing operation exercise. तो यहाँ पे so AIB delegates were fortunate enough to get audience with Honorable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji 4 times in last 1.5 years. First time at Bangalore on 20 March 2020, second time at Cochin in February 20, and third time at Delhi on 30th June 21, and fourth time again in Bangalore on 2nd July 21 on operation issue. And on each occasion she heard AIBRF delegations with patience and gave positive response. उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे response दिया है. Since October 2020 again during her speech in AGM of IBA on 10th of November 2020, we are of considered view that these organization efforts made by AIBRF has helped in creating very favorable climate for operation and task of the committee easier. तो ये एक अपील करी गई है. So more than 1 lakh bank pensioners are 80 and above. For them immediate operation is question of life and death. तो ये AIBRF की तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे हॉनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट डाली गई है फ्रेंड्स.